Himanshi. I'm back with another common, point of negotiable instrument. So, and in this video, we will discuss about some common traits of negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांसफरेबल बाय नेचर, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है नेचर में. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी फ्रीली ट्रांसफर्ड एज मनी टाइम्स एज नेसेसरी अंटिल इट रीचेज मेच्योरिटी, मतलब उसे जितना ट्रांसफर कर सकते हैं उतना करते हैं, बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि क्या होती है एक तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है कुछ जो कि कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है. तो जब तक वो एक पॉइंट पे, एक मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचती तब तक वो ट्रांसफ़र हो सकती है एंड उसकी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट इज सफिशिएंट इफ इट इज़ पेएबल टू द बियरर. डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट जो है वो सफिशिएंट होगी अगर वो पेएबल होगी बियरर को. हाउएवर इफ इट इज़ पेएबल टू ऑर्डर, it is accepted upon delivery and endorsement. In addition to becoming entitled to the money transferred with a negotiable instrument, the transferee also gains the ability to transfer the instrument again. Having an independent title. When it comes to negotiable instrument, the usual rule that states that no one can grant a superior title than he or she possesses does not apply. If the transferor had gained a negotiable instrument by fraud, but the transferee had acquired it in good faith for value, the transferee would have a good title with regard to the instrument. As a result, the title of the transferee in relation to a negotiable instrument is separated from the title of the transferor. Additionally, in circumstances involving negotiable instrument, the principle of nemo dat quod non habet, according to which no one can grant a higher title than he himself has, does not apply. So we will know about some common traits of negotiable instrument. We will discuss some more points of negotiable instrument act only in my next video. Till then, be safe. Just if you have some points, if you have some confusions, if you want to include anything in, then you can mention it in comment section and tell me about this. Till then, good luck, goodbye.